Okay, so probably we can start now. It's around 4, 5, 6, 7 students are here. आप लोगों ने अपनी असाइनमेंट वगैरह चेक कर ली है मुदस्सिर से? जी सर कर लिया। ओके, होपफुली अगले हफ्ते से मैं जो फिजिकल होगा, लेकिन आपको बार ईमेल करूंगा मैं पहले, ठीक है? Okay, so the last lecture we started boundary values or boundary conditions. So if you remember, we draw this kind of diagram. Just recall your memories. Maybe I don't know whether you have went down or not. Okay, so electric field uh, and their normal components and tangential components. What we want to see that at the interface, whether it's continuous or discontinuous, ठीक है? और what we concluded in case of electric field, okay, so electric field, जो उसके tangential components हैं that are continuous, equal to 0, or in other word, you can write like so the electric field, the tangential components of the electric field are continuous at the boundary, ठीक है? Sir, Continuous, yes. I have a question. Mm. Why are we taking the directions of the electric field in the two media in the same direction? Say it again, please. Why are we taking the directions of E1 and E2 both pointing upwards in this diagram? In this diagram. Yes. So what do you mean? I mean, we have to take it downward. Uh, The electric field, E1, we are like actually from one medium to another medium. We are going from one medium to another medium. Okay, this is a medium 1 here, yes. and this is medium 2 here. So electric field is moving like this. But if it's ठीक है? being produced by a surface charge density, then shouldn't it point upwards in medium 2 and downwards in medium 1? Why so? Uh, If there is charges on the surface. yes. So if there is a charges on the surface, what we are considering, there is electric field here, and that the electric field is passing through or not. So Okay. is this electric field produced by those charges or by some other sources? By some other sources at the moment. So if Uh, the charges on the surface, if we consider the electric field is produced by these charges, that will be, I mean, different case.
ठीक है, Okay. ठीक ठीक है। Yes. अच्छा, उसके बाद हमने मैग्नेटिक फील्ड के कंपोनेंट लिए थे, ठीक है। और मैग्नेटिक फील्ड के कंपोनेंट थे, दैट वाज आल्सो शोइंग uh, the continuous at the boundary. And if you remember, sorry, it was not continuous, because if you remember the equation here, that was something wrong here. Just a minute. Okay, yeah. तो उसमें था कि H1T और H2T जो है is equal to K, ठीक है। That K was equal to I over L, ठीक है। And this is a current per unit length. So current per unit length means this thing is not equal to 0. तो ये जो आपके पास है that is not equal to 0. So इसका मतलब है, देखिए, they are discontinuous, ठीक है। So that is discontinuous at the surface, ठीक है। ये हमने पहले प्रूव कर चुके हुए हैं, ठीक है। Now if we go further, तो हमने एक और डायग्राम ड्रा की थी। That was like, okay, so here we are only considering the normal components, okay. So this is a medium 1 here, this is a medium 2 here, D1 and D2, D2N or D2. Here is D1 and D1T. ठीक है. So we went through some steps, and we concluded that D1N and D2N is equal to sigma. So it's non-zero. ठीक है. Is not equal to 0. So it means this electric field here, the normal components, of the electric field, this is electric displacement, okay, so you can write in E form as well. Okay, so these are discontinuous, ठीक है, at the boundary or at the interface. Okay, so यहाँ पे क्योंकि कोई सोर्स नजर आ रहा है हमें, so it means that is discontinuous, ठीक है। और उसके बाद ये हमने इलेक्ट्रिक फील्ड, उसी तरह अगर मैग्नेटिक फील्ड को हम देखें, okay, if we consider that for the magnetic field as well, and using the equation uh, which was like Gauss's law for magnetic field, ठीक है। उसके लिए equation we know already that this one is equation, but simplification is same like we studied in the last lecture. And we are not considering the tangential components, we are only considering the uh, normal components. So in this case, we can write like, omitting the other the steps here, and so it means it's like P1N, P2N is equal to 0. Okay. So what is showing the magnetic field, the normal components of the magnetic field, uh,
is continuous at the boundary or at the interface. इस सूरत में if we go back, यहाँ पे जो है if we take the tangential components, then electric field is continuous at the boundary and the magnetic field is discontinuous at the boundary. And if we take normal components, in case of normal components, the electric field is discontinuous and the magnetic field is continuous. Okay. So these were some basic boundary conditions. More will come later on. Now we move towards the kind of wave equation. So we know already the Maxwell equations. That electric field, magnetic field, okay, curl of electric field, okay. So here source and here source, okay. So these are equation with the source. If we take it source free, if we take it source free, so in this case, curly D over curly D. Okay, so we have equation with the source and without source. ठीक है? And you know that D is equal to, okay, and so that this equation we can write like, okay, so if without source, that would also be 0. ठीक है? Or in case of magnetic field, we already know that it's like this. And so it can be modify here. Excuse me. So here can be like this. ठीक है? इसी तरह इधर H आ रहा है, B भी आ सकता है और इधर D भी आ सकता है. ठीक है? Okay. So these were the equations we already know. And these are the equations which we'll be using again and again for different kind of concepts and different kind of problems. So if we have this one, and if we write in the B form, like, so considering this one without source, or with source can also be possible, but without source is at the moment is more important. So we will be writing in, so D value is converted to the E and H value is converted to the B. Okay. Okay, so del cross
B इसमें permeability और permittivity, electric field. Okay, and if we write like this, that is also valid equation. Okay. Now we have these sets of equations with source and without source. Let's see now if the medium is homogeneous. ठीक है. Homogeneous medium. Homogeneous medium. Homogeneous medium क्या होता है? जिसमें एक्सक्यूज मी, जिसमें आपकी जो परमेबिलिटी है, परमिटिविटी, दे आर कॉन्स्टेंट्स. ठीक है. एंड constant with respect to position and time as well. ठीक है. So if I write like the medium in which are constant with respect to position and time. Okay. So the permeability and permittivity, they are constant with respect to the position and time. अगर तो ये situation है, ठीक है. So in this case, is equal to 0. There is no source. ठीक है. And which is also one of the special case or one of the case of the Maxwell equations, और already हमने इसको देखा है. So rest of the equations in this case in homogeneous medium, okay, so these are the other equations. ठीक है. Homogeneous medium, these things are constant. ठीक है. So constant with respect to the position and with respect to the time as well. ठीक है. एक होता है inhomogeneous medium. Inhomogeneous medium में these values, permittivity or and permeability, they are depending on something that we see later. Okay. Now we have one equation which is this one. ठीक है. इसको हम लेते हैं अभी. Del cross E is equal to, this is basically the Faraday's law. After taking this equation, we apply some vector calculus formulas which we already know and try to simplify it.
So if we have like okay, if we multiply with the del from both sides, okay. So now we apply some uh, वेक्टर कैलकुलस में जो फार्मूले वगैरह पढ़ते हैं, ठीक है. So if we apply on this side first, we get so there is one step I missed. Wait just a minute. Okay, curly over curly t, and this one is equal to, if you go back and see, this one is equal to this one, okay. So this one is equal to curly E over curly T. So basically you just put this value here, and this one is equal to 0, okay, for the homogeneous. So 0 curly del square is equal to minus curly over curly T, and that is basically let me curly square curly T square, ठीक है. And further it can be written like so. We have this equation. So this equation, what it shows electric field only, ठीक है. Del is basically, it's showing its space dependence of the electric field, और जो आपकी right side है that is showing the time dependent जो आपकी electric field है, ठीक है. This is also kind of wave equation, ठीक है. इसमें सिर्फ electric field को हम use कर रहे हैं. So we have here square E
Okay, so this is can be a वेव इक्वेशन. वेव इक्वेशन बेसिकली क्या है, इसमें एक साइड इसकी जो टाइम डिपेंडेंट है और एक साइड इसकी जो कोऑर्डिनेट्स है आपकी स्पेस या पोजीशन डिपेंडेंट है. ठीक है, सो वी कैन कॉल इट दिस इज अ वेव इक्वेशन. ठीक है, नाउ एक और नाम भी हम पढ़ते हैं, उसे हम कहते हैं हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन. एंड that will also, I mean, in this form it can be written, but usually it's written in the other form. So Helmholtz equation. Okay. Okay, so one equation we have here now, which is called the wave equation. And this one we started with like using the equation. Okay, using this equation. Now, we know another Maxwell equation, which is if we consider the free space, then we have to remove this thing. So here, curly over curly E is the equation, another equation. We have this equation. Okay. Now we want to have equation for the magnetic field. Okay. Similarly, we take the cross product del. Okay. Both sides. So it will be like so. With the help of some formulas, okay, we can here and here curly cross E. Okay. So this one will be 0 because delta B is equal to 0. Okay. And this one del cross E. So del cross E is equal to minus curly B over curly D. Okay. So minus del square B and here minus sign will come. You have curly over curly D and curly B over curly D. So इसका मतलब है कि
we can write like minus curly square magnetic field and this one. ये साइन इसका कैंसिल हो गया, ठीक है. And now we move to the next slide. If we move to the next slide, we have curly t square. Okay, so this is wave equation in the form of magnetic field. Okay, that is wave equation in the form of magnetic field. This was for the electric field, ठीक है, or this one is for the magnetic field. So here electric field and the above equation is for the magnetic field. Now we have two wave equations, and these two wave equations left side with the position and right side with the time. If we write in the component form and comparing the components in the on the both the sides, so we can like you know already this del is equal to okay, and because it's square, so we can write like curly over curly x square curly y square plus curly over curly z square. Okay, so that is electric field with the electric field. Now if you compare the I, j, k unit vectors both the sides, okay, so we can write like we can write like ex, okay, and here is also curly square x electric field along x-axis only like this, and for y only, and z only. Okay, and similar way we can also write for the magnetic field as well. Okay, if you split up in the
component form. Okay, so like this one, del square Ex is equal to, you can write like this as well. All these are like this. Okay, so now we move further. So if the waves, these are wave equations, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड के लिए और इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए. So if the waves are periodic, ठीक है, if the waves are periodic, then we know already electric field, it has both the components, the space and time. So we can write in this form. Okay, so this, we already have idea about this form. Okay, similarly for magnetic field, we can write like, okay, so the waves are periodic, it's going periodically. So electric field and magnetic field, excuse me, electric field and magnetic field uh, can be written in the form as written there, कि उसके x axis components को अलग कर लिया और उसके time को अलग कर लिया. So only we are considering x axis components here, ठीक है. Now if we differentiating with respect to time, so that would be like, this, ठीक है. आयोटा और जो ओमेगा है वो बाहर आ गए नेगेटिव के साथ, t क्योंकि एक्सपोनेंशियल है वहां पे, so this is like this, ठीक है. इसी तरह we can do it for the magnetic field as well. तो magnetic field की सूरत में we have here P omega t, ठीक है. ये आपने E और B को डिफरेंशिएट किया है विद रिस्पेक्ट टू टाइम. So in this case basically yeah, so now this is we differentiated with respect to time, electric field और magnetic field को. If you remember this thing, actually we are doing for the homogeneous medium, ठीक है, homogeneous material or homogeneous medium. Similar kind of things we may also need for the inhomogeneous medium, ठीक है. इसके further steps अभी हैं, but first I want to discuss inhomogeneous medium, then we
discuss more, because ultimately we have here like double differential. Okay? And after taking double differential, we have to substitute here. Give me 1 second, actually. There's some technical issue here. Okay, just a minute. Yeah. You can see what I'm sharing now or not? यस सर नजर आ रहा है. But something is wrong here, because all the things are vanished. I don't know what. Anyway, we have to continue. Okay, so we leave these things here. Uh, we know that the equation for electric field okay, so this is, sorry, electric field, and for magnetic field and we have curly over curly T here, omega, and this one, and curly B, E is equal to E, sorry, B, and exponential. ठीक है? Okay. Another material or medium, we call it homogeneous. Actually, inhomogeneous, sorry.
There is something wrong actually. Previous my slides are gone somewhere. I don't know what is the problem. Okay, so in homogeneous medium, as I mentioned, uh, just a minute, just a minute. Okay, uh, I don't understand actually. My previous slides are gone. I don't know where it goes. So that was the confusion. Okay. Okay, we'll continue here. Uh, we don't go to inhomogeneous yet. One thing which I was supposed to mention to you कि जब होमोजेनियस मटेरियल या मीडियम लेते हैं हम उसके अंदर फर्दर जो है वो क्लासिफिकेशन हो जाती है ठीक है दैट इज लाइक आइसोट्रॉपिक नॉन आइसोट्रॉपिक ठीक है होमोजेनियस मीडियम और मटेरियल एंड देन आइसोट्रॉपिक मटेरियल ठीक है उसके अंदर क्लासिफिकेशन आइसोट्रॉपिक मटेरियल अब आइसोट्रॉपिक मटेरियल क्या है होमोजेनियस मीडियम that the things which are the permeability or the permittivity they are independent of space and uh, time ठीक है position of time isotropic material में हम क्या देखते हैं that is the response of the material or medium you can say mostly call it material uh, response उसकी material की देखी जाती है to the field कोई अगर उस field apply की हुई है ठीक है and what is the response of that material or medium ठीक है and if I write like it has to be uh,
the material whose response to the field is direction dependent. ठीक है? Homogeneous medium और homogeneous material के अंदर उसको फर्दर एक कैटेगरी है जिसे हम कहते हैं आइसोट्रोपिक और नॉन आइसोट्रोपिक. हियर वी आर ओनली सी द आइसोट्रोपिक material. So isotropic material basically the material whose response to the field is direction dependent. ठीक है? मैग्नेटिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड बेसिकली उसकी डायरेक्शन क्या है, उसके मुताबिक वो मटेरियल बिहेव करता है. ठीक है? सो दिस इज वन ऑफ द थिंग ऑफ द आइसोट्रोपिक मटेरियल इन होमोजेनियस मीडियम. ठीक है? उसके बाद if we move further, that we already know that this thing, ये जो है इसे हम permeability कहते हैं. ठीक है? And it's for the free space and its value is 4 pi 7 over m. ठीक है? उसके बाद we have this permittivity is for the free space as well, and its value is 8.85. This one. ठीक है? Newton meter square per coulomb square. And after that we have if you remember in the this wave equation we have this value. Okay, I'm trying to find out this thing. ठीक है? So if we make it like multiply both these things or both these values, ठीक है? अब अगर इसको जो मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास जो आंसर आता है दैट वुड बी लाइक 1.11 minus 17 h and m would c square. ठीक है? So if we rearrange, moving to the next slide now, I hope this slide will stay. So 1.11 एक्सक्यूज मी सर. 17. Yeah. सर एक स्टूडेंट हैं जो जिनसे क्लास ज्वाइन नहीं हो पा रही, उनको टेक्निकल इशू है, तो शी इज़ रिक्वेस्टिंग कि आप उनको अगर ऐड कर सकें. अंबर के नाम से हैं वो ऑलरेडी यहाँ पे होती हैं. सर. वो आज उनको ज्वाइन नहीं कर पा रही फॉर सम रीज़न. I don't see her name here. उन्होंने रिक्वेस्ट भेजी है मुझे. जी सर, मैंने आपको ईमेल भी की है वैसे. Just a minute. रिक्वेस्ट उन्होंने नहीं भेजी, मुझे सिर्फ यही कहा है उन्होंने. तो शी शुड सेंड मी अ रिक्वेस्ट. अगर वो मुझे रिक्वेस्ट भेजेंगी तो मैं एक्सेप्ट करूँ, क्योंकि मेरा नाम नहीं है इधर. ओ सर, मैं उन्हें कहता. हाँ, उनसे कहें रिक्वेस्ट भेज दें तो फिर ये. ओके. सो
if this is the case here, okay, so we rearrange and adjust. We can write in this form. Uh, is equal to 1 over 9 16, ठीक है. ये 1.11 और 10 to -17 को अगर आप 1 over की फॉर्म में लिखें तो that would be like this, ठीक है. और this is basically you can write like, okay, इसका स्केल है तो ये आता है, ठीक है. So it means कि ये आपके पास जो वैल्यू है that is equal to 1 over c square, ठीक है. And if we have this one 1 over c square here, ये जो आपके पास परमेबिलिटी और ये आपके पास जो परमिटिविटी है फ्री स्पेस is equal to 1 over c square. So 1 over c square is very important thing. C is the speed of light, you already know that. And इसका मतलब ये हुआ कि we have two wave equations, ठीक है. और वो वेव इक्वेशन क्या है जी आपके पास, E, okay, equal to this one, E over t square, ठीक है. So we can write like minus ठीक है, इसको हम रीअरेंज करके ऐसे रख सकते हैं. So if this is the case here and we can substitute this value here, so this equation will be 1 over c is equal to 0, ठीक है. So this is basically Helmholtz equation, systematic way writing the equation, ठीक है. This is Helmholtz equation, wave equation ही है. It's Helmholtz equation. और it play important role in solving some problems related to the electric field as well. Now we already know that which we started this kind of the calculation in the last slide, or maybe some slides are vanished. We know already कि हमारे पास we consider or we have E, X and T, ठीक है, और B, X and T, ठीक है. ये आपके पास है स्पेस, ये आपके पास है टाइम, स्पेस, टाइम. और हमने if you remember we separated the time and the space components, so it was written like omega t omega t, ठीक है, for both electric and magnetic field. And we have used, if you remember, is equal to minus iota omega e, ठीक है. और
सिमिलरली इसको हम इसका डबल डिफरेंशियल अगर कर लें, सो दैट वुड बी लाइक ठीक है। सो इस ई की जगह पे आपका ये दिस थिंग इज कमिंग हियर, ठीक है। और यहाँ पे अगर मैं इसको रिमूव कर दूं तो दैट वुड बी लाइक करली ओवर करली टी इज इक्वल टू आयोटा मेगा, ठीक है। और यहाँ पे आयोटा स्केयर जो है -1 के इक्वल आ गया, सो दैट इज लाइक दिस एंड हियर आई रिमूव हियर, सो यू विल गेट करली स्केयर ओवर करली टी इज अप्रोचिंग टू माइनस ओमेगा, ठीक है। तो इसको डिफरेंशिएट किया, फिर एक दफा डिफरेंशिएट किया, इसको डबल डिफरेंशिएट किया, तो दैट वैल्यू जो आयोटा मेगा थी वो ओमेगा स्केयर माइनस ओमेगा स्केयर होगी, ठीक है। एंड उसके बाद वी ऑलरेडी नो वन थिंग कि ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई एफ एंड दैट इज फ्रीक्वेंसी, दिस अ फ्रीक्वेंसी, ठीक है। और दिस फ्रीक्वेंसी वी कैन राइट लाइक 1 ओवर टी, ठीक है। सो बेसिकली व्हाट इट शोज हियर, ये आपको ऑलरेडी पता होगा कि that number of waves passing through a point per second, ठीक है। number of waves passing through a point per second. So omega basically is angular frequency is equal to 2 pi f, ठीक है। f is equal to 1 over t, and then we have like omega 2 pi f is equal to 2 pi over t, ठीक है। तो ये बेसिकली जो है ये टाइम पीरियड है आपका। So simply what we have in the last equation here, if we go like this here, कि हमारे पास जो इक्वेशन बन रही थी that is equal to 0, ठीक है। We have to substitute the value of this one, okay। So if we substitute the value of this one, what we get, curly over curly t square is equal to minus omega square, okay। So in the previous slide, from the previous slide, so it means we can write minus 1 over c omega, okay, and e is equal to 0, so equal to 0, and plus omega square c square e is equal to 0, ठीक है। Omega square over c square we can write k square, which is a wave number, ठीक है, which is a wave number। k जो है वहां पे वेव नंबर है, ठीक है। So this equation
प्लस k स्क्वायर और e स्क्वायर। So basically this is the equation. The Helmholtz equation actually is written in this form. ठीक है, जो हमने ऊपर उसको भी हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन कह सकते हैं, आप कहते हैं द वेव इक्वेशन सिंपल, बट मोस्टली जो आपकी हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन है ना वो इस फॉर्म में लिखी जाती है। ठीक है, और इसको प्रोपगेशन इक्वेशन भी कहते हैं। सो प्रोपगेशन इक्वेशन क्यों इसको कहते हैं, क्योंकि इसमें वेव नंबर आ रहा है जब प्रोपगेशन शो करता है। ठीक है, कि वेव प्रोपगेट कर रही है, और इट्स इलेक्ट्रिक फील्ड बेस्ड इक्वेशन है ये। ठीक है, और इसमें जो एडिशन हुई है दैट इज वेव नंबर की, ठीक है, के की, एंड दिस इक्वेशन इज यूजुअली यूज्ड टू सॉल्व मेनी problems which are related to the propagation, wave propagation. और electric field is depending on the position here, not on the time. यहाँ पे टाइम वाला जो है फैक्टर वो खत्म हो गया है, और this wave equation is depending, is showing that the position of the electric field. ठीक है, तो प्रोपोगेट कर रही है, एक पोजीशन दूसरी तीसरी चौथी पोजीशन पे आ रही है। ठीक है, दैट इज व्हाई इट्स कॉल्ड प्रोपोगेशन इक्वेशन। ठीक है, सो ये था आज का लेक्चर। ठीक है, और आई डोंट नो द प्रीवियस स्लाइड्स आर eliminated somewhere, I don't know. Anyway, ये जो अंबर रियाज हैं ये तो हैं यहाँ पे। क्या नाम बताया था आपने? अंबर? सर, हाँ जी, यस सर, अस्सलाम वालेकुम। मैं वो बरसा। बहुत देर से ये क्लास मुझे शो नहीं हो रही थी, पता नहीं शायद इंटरनेट का इशू था, तो वो सर फिर अब लग गई थी तो मैंने ज्वाइन कर लिया। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। दैट कुड बी बिकॉज ऑफ इंटरनेट, बिकॉज आप यहाँ पे ऑनलाइन भी नजर नहीं आ रही थी। ठीक है, यस सर, वो शायद मेरा इंटरनेट डाउन था, हालांकि शो हो रहे थे सिग्नल्स। ठीक ठीक ठीक। अच्छा, सो टुडेज लेक्चर इज कंक्लूडेड। ठीक है, तो अगर आपने पूछना है कुछ तो पूछ लें। ये इबादुर रहमान जो है ये नजीबुल्ला है यहाँ पे? जी सर। कितने आपने अटेंड की है मेरी ये क्लासेस? मैं सर शुरू के 3 लेक्चर्स मिस हुए थे शायद। नहीं, उसके बाद आप लास्ट लेक्चर में मेरा नहीं थे, उससे पहले वाले में लास्ट भी नहीं लेक्चर थे। में था मैं। आपने असाइनमेंट लेट सबमिट कराई थी? नहीं सर। कौन कौन थे जो जिन्होंने लेट सबमिट कराई थी, बताएंगे मुझे जरा? सर मेरी लेट थी, लेकिन 1 मिनट लेट थी, तो ठीक, आपने कहा था इट इज नॉट हाँ अ बिग इशू। ठीक है, ठीक ठीक ठीक, लेकिन कोई एक और भी था जिसकी कोई 1.5 घंटा लेट थी, आई डोंट नो। सर मेरी 10 मिनट्स लेट थी। इसके अलावा और भी कोई अंबर रियाज हैं? हाँ यस सर। अच्छा, आतिफ अली? यस सर, यस सर, मैं इधर ही हूँ। आप आपने टाइम पे कराई थी अपनी? जी सर, मैंने 1 दिन पहले ही करवा दी। अच्छा, ओके। एंड कोहर राइस हैदर, यस सर। ये किसके माइक में नॉइज आ रही है?
हाँ, गोहर राइस हैदर। यस गोहर, आपने कितने मेरी क्लास अटेंड की हैं ये? सर, मेरे ख्याल से एक शायद मैंने मिस की होगी, बाकी मोहम्मद अटेंड की है सारी। ठीक है, मोहम्मद यासीन। मोहम्मद यासीन, ये ड्रॉप कर गया, ये क्या मसला है इसका? आप में से कोई बता रहा था गालबन ये थिंकिंग टू फ्रीज। कोई बताएगा? वो आसिफ ने बताया था, वो शायद आज आया नहीं। अच्छा अच्छा, दूसरा मैंने आप लोगों से रिक्वेस्ट की थी कि अपनी डीपी जो है ना वो लगवा लें, ताकि मुझे कोई अंदाजा हो जाए करे कि किसकी शक्ल क्या है। ठीक है, क्योंकि इस तरह वो पहचानने में जरा आसानी हो जाती है, इसलिए कंफ्यूजन रहती है कौन आया था कौन नहीं आया था। ओके सो यासीन इज नॉट हियर। काजी माजू सलाम। यस सर। कौन है? अच्छा आप हैं काजी, ठीक ठीक जी ठीक। जी जी। और अक्सा रहमान। अक्सा रहमान, अक्सा रहमान का आइडिया है ये? शी इज रेगुलर स्टूडेंट और व्हाट एग्जैक्टली? किसी को है आइडिया? अंबर आप जानती है अक्सा को? Yes, sir. I know her. ओके, दानियाल इमाम। यस सर। आपने टाइम पे करवाई थी अपनी असाइनमेंट? जी सर। इबादुर रहमान। इबादुर रहमान, ये काजी आपका ये है, ये फेलो है आपका इबादुर रहमान? जी सर। आए तो थे सर मीटिंग में, शायद अभी भी चले गए। ठीक है, मोहम्मद उबैदुर रहमान। यस सर। आपने टाइम पे करवाई थी अपनी असाइनमेंट? यस सर। मतलब विदिन डेडलाइन थी, पूरी एंड टाइम पे थी, लेकिन विदिन डेडलाइन। अच्छा, ताहिर सज्जाद भट्ट। ताहिर सज्जाद भट्ट। यस आसिफ सर। कहाँ थे, सोए हुए थे पहले आप? ताहिर सज्जाद भट्ट, कौन सर? आपकी बात कर रहा हूँ, बड़ा लेट मैं रिप्लाई तो किया सर ना। सोया नहीं हूँ सर। अब लेट रिप्लाई आई ना आपकी। सर वो ऑब्वियसली माइक पे मैं चला रहा था, अच्छा तो उसमें अच्छा, तो आपने टाइम पे करवाई थी ना अपनी असाइनमेंट? जी सर, मैंने सर 20 आधा घंटा पहले से जमा करवा दी थी। ठीक है, आसिफ रजा खान। और सर मैंने क्लासेस भी आपकी सारी ली हुई हैं, एक भी क्लास नहीं छोड़ी है मैंने। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। आसिफ रजा खान, ये आसिफ रजा खान वही है जो समथिंग लाइक जिसको आई थिंक ही इज द सेम गाय। फातिमा इखलाक। यस सर। ये आप जानती हैं अक्सर रहमान को, फातिमा इखलाक? नो सर, मेरे जो बैचमेट है वो आसिफ हैं, और आई थिंक आज उन्होंने क्लास नहीं ली। अच्छा अच्छा, ठीक है। नजीबुल्लाह, यस सर। आपने असाइनमेंट टाइम पे करवाई थी? जी सर, मैंने टाइम से पहले कराई थी। एनीवे, आई फॉरगॉट द नेम ऑफ द गाय जिसने जो है ना, लेट मी चेक।
ये राइस हैदर कौन है? आई राइस हैदर, गो राइस हैदर। जी सर। आपने कहाँ टाइम पे करवाई थी? आपकी वहाँ यानी कि 1.5 घंटा लेट है तकरीबन। हाँ जी सर, मैंने रात को 1:30 बजे सबमिट कराई थी। तो अभी मैंने पूछा, आप कह रहे हैं आप टाइम पे करवाई थी आपने। नहीं सर, पहले नहीं आपने मुझसे पूछा। अच्छा, नहीं पूछा आपसे। ठीक ठीक ठीक, चले ठीक है फिर। If you have any question regarding today's lecture, maybe you can ask in the next lecture. ठीक है, तो then see you in the next lecture। और उस फिर आपको बताएंगे कि फिजिकल जो है वो कब शुरू हो रही है। ठीक है, ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच। ओके, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफ़िज़।